Good morning, all of you. I hope audio and video is completely fine. Rajendra, good morning. Good morning, Sikha Jai Jagannath. Good morning, Birbal. Good morning, all of you. So today is 23rd August. We will discuss national international news. And those who are online, uh, please share this session with your friends as well so that others can see this session. ଆପଣଙ୍କ ଭିତରୁ କିଏ କାଲି ୟା କାହାର ମେନ୍ସର ରେଜଲ୍ଟ କାଲି ଆସିଛି? କେଉଁମାନେ ମେନ୍ସ ଲେଖିଥିଲେ ଏଥରକ? ଯେଉଁମାନଙ୍କ ରେଜଲ୍ଟ କାଲି ଆସିଛି? ଏନିୱାନ୍? ଓକେ, ସୋ ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆଜିର ସେସନ୍। ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଖିବା। SCO ସାଂଘାଇ କୋଅପରେସନ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍, ଗୁଡ୍ସ ଆଣ୍ଡ ସର୍ଭିସେସ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ, MPC Monetary Policy Committee, Sustainable Tourism, Criminalization of Politics, and Supreme Court modifies its order with respect to stray dogs. So first of all, SCO, China calls for regional cooperation ahead of SCO meet. So SCO is an international organization or intergovernmental particularly. What is the meaning of intergovernmental? That means within the government or among the government, this agency or this organization has been set up among the government or kind of a block, you can say. Jaro main objective kono, it's a political and security alliance. Political and security alliance, that means when we say political, that means you'll have a relation with respect to, let's say, trade, economic relation, single voice at the global level, okay, to counter the Western hegemony. So geopolitical basically, and security alliance. When we say security alliance, that means alliance to protect the self-interest, let's say to protect or to counter terrorism, what we call, or if any such member would be attacked, at least you will have a anonymous voice regarding that. ତେଣୁ ଗୋଟେ security alliance or political or security alliance କହିପାରିବା, and it was started or it was founded in 2001. So in 2001, countries which started this SCO or this organization, they were Kazakhstan, China, Kyrgyzstan, Russia, Uzbekistan, Tajikistan. These are few countries who started this SCO, Shanghai Cooperation Organization. Now, if you see in detail, 2001 it was established, but before this, in 1996, is a particular association was set up, that was Shanghai 5. That means 5 such countries, they have come forward and established this: China, Russia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, and Tajikistan. These are the 5 countries. Basically, these Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan from the Central Asian countries, and China and Russia, other 2 countries. If you see the current member or number of members right now, it's 9 members organization: China, Russia, India, and Pakistan. They both joined in 2017. Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Uzbekistan, and Iran also joined in 2023. So now it's a 9-member organization. Okay, latest number. If you see the headquarter, it is in Beijing, China. Official language Russia and Chinese. If you see the permanent body, gote achi Shanghai Cooperation Organization Secretariat, that is in Beijing, and a regional anti-terrorist structure RATS gote achi, that is in Tashkent and Uzbekistan. If you see the key focus area, regional security, counter-terrorism, economic cooperation,
कनेक्टिविटी एंड एनर्जी कल्चरल एक्सचेंजेस मु आपको ब्रीफली कहबी इंडिया इंटरेस्ट कौन विथ रेस्पेक्ट टू एंगेजमेंट इन द एससीओ फर्स्ट ऑफ ऑल जेहेतु सेठी चाइना अच्छी सेठी पाकिस्तान भी अच्छी सो इंडिया कैन काउंटर देयर स्ट्रैटेजी अगेंस्ट इंडिया लेट्स से दैट मीन्स जदि चाइना या पाकिस्तान कौन से भाई स्ट्राटेजी करूँ टू काउंटर इंडिया टू चेक ऑन इंडियाज राइज एटलिस्ट से जगह इंडिया डिप्लोमेटिकली या डिप्लोमेसी थ्रू रे कारण से रशिया भी अच्छी रशिया चाइनार इट्स अ गुड रिलेशन से बाकी कंट्रीज गुड़िक अच्छा तेणु इंडिया कौटि ना कौटि न्यूट्रालाइज करने ये जो आपणकर चाइना और पाकिस्तान जो रिलेशन को ताकू न्यूट्रालाइज करने ये ताकू काउंटर करने एंगेज अच्छी रिसेंट समिट जदि आप देखिए 2023 रे गोटे वर्चुअल न्यू दिल्ली डिक्लारेशन समिट होता 24 रे काजाखस्तान एंड 25 रे बेलारूस एक्सपेक्ट करा जाउची कि से 10th मेंबर हिसाब रे जॉइन करिवो ओके अच्छा मु आपको सेंट्रल एशिया विषय कहूली तो एक तो पाकिस्तान को काउंटर करवा सेकेंड हूँ सेंट्रल एशिया इज रिच इन नेचुरल गैस ऑयल ये सब रिजर्व भी अच्छी दैट मीन्स वी कैन एनश्योर द एनर्जी सिक्योरिटी थ्रू दिस ये भी गोटे फैक्टर एंड बर्तमान आप देखिए खास करके G20 पर वी हैव डेवलप जो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर या ट्रांसपोर्टेशन कॉरिडोर बाईपासिंग द पाकिस्तान ओके आम सेंट्रल एशिया एंड रशिया चाइना सहित भी ट्रेड करें सो दिस इज अनदर फैक्टर जो कि इंडिया वांट्स टू एंगेज इन दिस ऑर्गेनाइजेशन इफ यू सी द चैलेंजेस कौन अच्छी ऑब्वियसली चाइनीज हेजिमनी चाइनीज डोमिनेंस चाइना एंड इंडिया भितर रिलेशन खराब हम पाकिस्तान एंड इंडिया भितर भी रिलेशन जदि खराब हम डेफिनेटली इट विल लार्जली इम्पैक्ट दिस ऑर्गेनाइजेशन नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट जीएसटी काउंसिल टू मीट September 3rd ऑन जीएसटी कट ओके देखिए the 56th GST Council meeting is set to take place in New Delhi on September 3 and 4, 2025. The main focus will be on implementing simplified two-rate GST structure, a long-standing reform initiative. GST came in 2017 and there are a regular demand from or across the country कि rationalize करा जाओ structure को change करा जाओ because if you see the developed countries जो जगह जीएसटी गुड़िक इम्प्लीमेंट भी होती से जगह मैक्सिमम गोटे दुईटी रेट अच्छी बट इफ यू सी इन इंडिया वी हैव 5% स्लैब वी हैव 12% स्लैब वी हैव 18% स्लैब वी हैव 28% स्लैब वी हैव 40% स्लैब ऑल्सो एंड दैट इज ऑन द सीन गुड्स हूँ आप पान मसाला टबैको ऑल दोज थिंग्स ओके तो प्रपोज्ड स्लैब कौन अच्छी ना 5% स्लैब गोटे रहिबो जोटा कि एसेंशियल एंड मेरिट कोड आम कह आ गोटे आपंकर 18% स्लैब रहिबो दैट मीन्स 12% ही 5% रे आड हो 28% ही 18% रे आड हो गोटे 40% सेगमेंट रहिबो जोटा कि लग्जरी एंड सीन गुड्स बोली कंसीडर करा जिवो इफ यू सी द बैकग्राउंड एंड रैशनल ये जो पर्टिकुलर इनिशिएटिव को प्राइम मिनिस्टर द्वारा प्रपोज करा जायथिला केबे देखंतु एटा करा जायथिला आपनकर इंडिपेंडेंस डे रो स्पीच रे प्राइम मिनिस्टर gave the signal a landmark next generation reform of the tax system से ये प्रपोजल को ग्रुप ऑफ मिनिस्टर को भी रेफर करा जाता एंड फाइनली ग्रुप ऑफ मिनिस्टर अग्रीड ऑन दिस कि ऑलमोस्ट दिवाली पूर्व दिस देयर विल बी ए गिफ्ट फॉर होल कंट्री आम जीएसटी काउंसिल विषय किसी देखा जीएसटी काउंसिल कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस होची इट्स ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी थ्रू एन अमेंडमेंट we have inserted it in the constitution that is under article 279A and it was introduced in parliament 101 or 101st constitutional amendment act 2016 if you see the function it federal decision making body with respect to what goods and services tax okay and आपण देखिए जो आपनकर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को प्रमोट करबा पई इटा को मध्य प्रायोरिटीज दि जाइए दैट मीन्स जो मेंबर्स मैंने अच्छा जमी चेयरपर्सन अच्छा यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर एंड इफ यू सी द अदर मिनिस्टर्स देन आपनकर यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फाइनेंस एंड फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ डिफरेंट स्टेट्स से माने भी पार्ट अच्छा ये पर्टिकुलर काउंसिल जीएसटी काउंसिल वोटिंग स्ट्रक्चर जदि आप देखिए
स्टेट्स को हायर वेटेज दि जाइए, स्टेट्स को दि जाइए 75% ऑफ जो मेजोरिटी रे वोटिंग या वोटिंग रे डिसीजन होची स्टेट्स को दि जाइए 2/3 वेटेज एंड सेंटर पाखे अच्छी 1/3. हायर वेटेज हैव बीन गिवन टू द स्टेट बिकॉज ऑफ दिस कोऑपरेटिव नेचर ऑफ फेडरलिज्म. नेक्स्ट देखिए एमपीसी. आरबीआई's Indranil Bhattacharya nominated as the MPC member. Let's see. Indranil Bhattacharya, Principal Advisor in the Department of Economic and Policy Research, DEPR, Reserve Bank of India, has been nominated as a member of the Monetary Policy Committee. His appointment follows retirement of Professor Jayant R. Verma, the external member, in August 2025. Okay. So external member ko retirement पर now this person has been appointed as a member of this MPC. MPC कौन देखिए? MPC is a statutory body. कहेंगे statutory body because with the amendment of RB Act 1934 in 2016 this MPC was instituted. MPC रे जदि आपण बैकग्राउंड को टिके स्लाइटली देखिए, MPC रे हमरो मेन सरकारंकर गोटे थिला कोन ना, while deciding the monetary policy आगुरु आरबीआई सोली मॉनेटरी पॉलिसी को डिसाइड करूला. while वर्तमान कौन ना, while deciding monetary policy both RBI and government should be part of that. okay, गवर्नमेंट रे भी ओपिनियन रही परिबो, आरबीआई रे भी ओपिनियन रही परिबो. तो सिट पे स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर आर्टिकल अंडर आरबीआई एक्ट 1934 ऑब्जेक्टिव जदि आपण देखिबे पॉलिसी रेट को या जो का में रेपो रेट बोली कहूचे ताको सेट करिवा, ताको फिक्स करिवा, ताको रिव्यू करिवा एंड गोटे इन्फ्लेशन टार्गेटिंग अच्छे एंड दैट इन्फ्लेशन टार्गेटिंग रेंज होची 4+-2. ओके, यदि आप मेंबर्स कंपोजिशन देखिए आरबीआई गवर्नर नंबर 1, आरबीआई डेप्यूटी गवर्नर जे कि मॉनेटरी पॉलिसी यूनिट इनचार्ज रे थांती. कारण इफ यू सी द आरबीआई स्ट्रक्चर रे गोटे होची गवर्नर, चारोटी होचंदी डेप्यूटी गवर्नर. सो द डेप्यूटी गवर्नर हु इज इन चार्ज ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी से आपनकर मेंबर रहिबे एंड 1 आरबीआई नॉमिनेटेड ऑफिशियल. ओके, 1 आरबीआई नॉमिनेटेड ऑफिशियल, दैट मीन्स टोटल आपनकर 3 जण आरबीआई साइड रो हे गेले. इफ यू सी द एक्सटर्नल साइड सेठी भी 3 जण आपनकर अछन जो मन को गवर्नमेंट नॉमिनेट करे. कारण अपॉइंटमेंट या नॉमिनेटेड कमिटी गोटे फॉर्म करा जाए जार आपनकर रेवेन्यू सेक्रेटरी या आपनकर जे डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स सेक्रेटरी अछन सी हेड करते एंड देन 3 जण एक्सपर्ट्स को गवर्नमेंट द्वारा मध्य नॉमिनेट करा जाए. वोटिंग जब देखिए एवरी मेंबर इज हैविंग 1 वोट. गवर्नर हैज द कास्ट वोट. मीटिंग जब देखिए एटलिस्ट 4 टाइम्स ईयर, कारण जो 4टी क्वार्टर 3-3 मास डिवाइड करा जाइछि तेणु से 4टी क्वार्टर अच्छी 4 टाइम्स ईयर. डिसीजन पब्लिश्ड विथ मिनिट्स. टेन्यूर जब देखिए एक्सटर्नल मेंबर्स करो टेन्यूर हो 4 वर्ष. पूर्ण थरे से मन को अपॉइंटमेंट दिया जीव ना. इफ यू सी द इन्फ्लेशन टार्गेटिंग इट इज 4+-2. ये जो रेंज टी डिसाइड करा जाइछि दैट इज प्रथमे 16 to 21% डिसाइड करा गला 5 इयर्स एंड देन अपन 21 to 26 पर्यंत डिसाइड करा जाइछि. ओके, सिग्निफिकेंस कौन देखो, इंस्टीट्यूशनलाइजेस monetary policy decision making, brings transparency and accountability, balances expertise of RBI with inputs from external economists, helps in anchoring inflation expectations while ensuring growth stability. These are the significance of MPC Monetary Policy Committee. Now, sustainable tourism. देखिए next, Niti Aayog report recommends model policy for homestays. Niti Aayog has released a report recommending a model policy for homestays in India to promote sustainable rural tourism, create livelihood opportunities, boost tourism economy by formalizing and standardizing homestay. Homestay होची आपनकर जेमती होटल्स रे आपन स्टे करूछन जेमती होमस्टे यानी कि सेठी प्रॉपर आपनकर फैसिलिटीज थिबो, सबू यू कैन कुक योरसेल्फ एज वेल. तो सेठी आपण स्टे करि परिबे एंड दैट इज चीपर दैन द होटल रेगुलर होटल टैरिफ. सो होम स्टे पई नीति आयोग हैज इंट्रोड्यूस दिस मॉडल पॉलिसी. कारण होम स्टे जदि आपनकर रहला ना तो आपनकर नुआ होटल
रेस्टोरेंट ये सब करने को पड़ो ना. सो एक्जिस्टिंग स्ट्रक्चर ही आप मैनेज करेंगे. सो दैट शोज व्हाट सस्टेनेबल टूरिज्म. Policy framework, a national level model homestay policy to guide states duties in framing their own policy. तो बेसिकली आपनकर ये जो कॉन्सेप्ट स्टेट अंडर रे आसुची बट गोटे काइंड ऑफ नेशनल लेवल ड्राफ्ट गोटे फॉर्म करा जाउची होमस्टे पॉलिसी रो. एंड होमस्टे पॉलिसी रो मेन आइडिया होची कोन लोकन को अवेयर करेबा एंड देयर मस्ट बी एनफ लॉ टू प्रोटेक्ट द privacy and safety of the people, so that people will have the confidence ସେମାନେ ହୋମଷ୍ଟେକୁ ପ୍ରିଫର୍ କରିବେ than the conventional hotel. Ease of living, simplified registration, single window clearance for homestay operations, quality standards if you see, voluntary certification rating system to ensure quality, hygiene and safety. Okay, so these are the sustainable tourism. Digital integration, encourage online platform, digital payment system integration, community participation, women and entrepreneurs, SSGs, okay, local artisans, capacity building, training in hospitality, waste management, first aid, cultural sensitivity, sustainability, eco-friendly construction, renewable energy use, water conservation, plastic waste reduction, financial support, low interest loan, subsidies, insurance coverage. ये सब जिन को आपको मैनेज करने को पड़ो if you go for the sustainable tourism. Okay. Significance कौन देखो, lifestyle for environment, support mission life, promotes decentralized tourism beyond traditional hotspot, employment opportunities for the local people, and formalize a growing informal sector, digital India and vocal for local initiative. ये सब जिनस को प्रमोट करा जाई परिबो once you go for this homestay kind of sustainable tourism. Next हो जी criminalization of politics. 40% of chief ministers face criminal cases. ADR report. Okay, जो आपनकर Association of Democratic Reform गोटे NGO अछि तार ही रिपोर्ट रे मेंशन अछि. According to the report by the Association of Democratic Reform, 40% of current chief ministers in India face criminal cases, including serious charges. The findings are based on self-sworn affidavit, यानी कि निजे जो से शपथ पाठ कर affidavit करी submitted to the Election Commission of India during the nomination. Okay. Indicator गुड़ी को देखो, total CM analyzed 30 chief ministers, states and UT, CMs with criminal cases 40%, serious criminal charges 37%, no criminal cases only 60%. Okay, so total 40% को पाखरे अपन करो criminal charges देखिए. CMs with asset 1 crore plus जार asset अच्छी, that means 97% are crore protis. Average asset of CM 33.96 crore. Highest declared asset Andhra Pradesh CM Jagan Mohan Reddy. Youngest CM Pushkar Singh Dhami Uttarakhand. Oldest CM Joram Thanga Mizoram 80 years. Okay, so these are few statistics with respect to chief ministers of India. Significance, it will highlight the criminalization of politics. Okay, so people will aware about it, this data. Wealth concentration among the political leaders, ये धीरे धीरे बड़ी बड़ी चलची, and electoral reform. Since criminal cases or criminal charges are there, so fast tracking the criminal cases against the politician, okay, stricter candidate selection, strengthening voter awareness, these are the few reforms which we need to implement. Criminalization of politics, sorry, title to change ही नहीं था. Okay. Tribal rights को नहीं कि देखो, the forest rights of tribals not settled for Great Nicobar Project Council. The Forest Advisory Committee of the Union Environment Ministry has flagged the forest rights of tribals have not been fully settled for the 72,000 crore Great Nicobar Island Project. तो जो प्रोजेक्ट आपनकर ऑपरेट होची से प्रोजेक्ट को नहीं कि आपनकर जे फॉरेस्ट एडवाइजरी कमिटी अच्छी से फ्लैग रेज करी कि सरकार तरफ जो क्लीयरेंस मिली से एक्चुअली क्लीयरेंस रियलिटी रे मिली नहीं, have not been settled yet.
Okay, the project being implemented by the Andaman Nicobar Island Integrated Development Corporation includes a mega transshipment port, airport, township, and power plant. Forest Rights Act जदि आपण देखिए mandates that forest land cannot be diverted without settling individual forest right, community forest right ଏବଂ forest right जदि आपण देखिए जोटा 2006 रे सेठी ग्राम सभा को आपणकर कंप्लीट पावर दिया जाइछि कि कोभली भाव रे यूज करा जिवो कंसेंट तार दरकार बट एठी बायपासिंग दैट कंसेंट बायपासिंग दैट प्रोविजन एठी आलोकेट करा जाइछि लैंड को. Similarly, tribal and ecological concern, Sompens, that is PVTG, and Nicobarese tribes inhabit the land. Concerns raised about the displacement, loss of livelihood, ecological sensitivity. Kind of other people's displacement or tribal people displacement with both differences. Great Nicobar is a UNESCO biosphere reserve, home to rare species like saltwater crocodile, leatherback turtle, Nicobar megapods, etc. Okay, so these are some of the concerns with respect to this forest rights. Project delay got a problem. 166 square kilometer forest land and this international container transshipment terminal ये जो आपनकर अछि ये प्रोजेक्ट जदियो डिटेल अछि बट गवर्नमेंट कौन कहूँ देखो project part of India's activist policy and strategic initiative in the Indo-Pacific and seeks to India a hub for global maritime trade. Okay, तो जदियो सरकारंकर प्रोजेक्ट तो अच्छी बट ये जो फॉल्स अप्रूवल दिया जाइए को प्रोजेक्ट को बाय द अंडमान निकोबर आइलैंड इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ताकू नहीं कि बर्तमान हमको देखा मिलूँ न्यूज़ रे. ओके, देखिए आगे Supreme Court modifies its order. Supreme Court modifies order allows release of stray dog. The Supreme Court has modified its earlier order that restricted the release of stray dogs, now allowing their release back into localities after vaccination and sterilization. तो सरकार आगुरु कहले कि shelter home तैयारी कर and just take away these dogs into that shelter home. Now Supreme Court has modified its judgment. Now Supreme Court says they will stay in their natural habitat or on the street provided they have proper vaccination and sterilization. Okay, so this is what the Supreme Court has said. So the Supreme Court emphasized a balanced approach between the animal welfare and public safety. If you see the key point background, rising incident of stray dogs attacks had led some states and local bodies to seek stricter control. Stray dog bite apanकर बड़ी चलची and Supreme Court orders had allowed capture but restrained release in certain areas. तो तांको कैप्चर करी रखिया ପାଇଁ थिला. तो वर्तमान सरकार कहउचंदी कि they can return to their original territories post vaccination and sterilization, emphasizing adherence to animal birth control rule 2023, stressed municipal bodies duty to create dog shelters, vaccination drives and sterilization programs. तो जदि शेल्टर हो गला तो से माने गो एते स्ट्रीट रे देखिबा को मिलिबो नाही. दे विल डेफिनेटली स्टे देयर. लीगल बेसिस देखो प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी एनिमल एक्ट 1960 तो लगातार भाव में डिफरेंट इंडिविजुअल्स एनजीओज माने से माने डिमांड करुले टू विड्रॉ सच ऑर्डर फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट पॉइंट ऑफ व्यू. तो एबीसी रूल्स यदि आप देखिए mandate sterilization and vaccination of stray dogs before release. Okay, and right to leave is having sabu dogs manakar right achi right to live in their habitat. So it ensures animal welfare, it ensures engagement of the local government with respect to the managing the stray dogs. Odisha news देखिबा हमने. Odisha government has announced plans to establish world's first center for jumbo survival in the sense elephant conservation by okay research, conflict mitigation, etc. Focused on Asia elephant conservation, human elephant conflict को minimize करेगा. This is another factor. If you see the planned function, research hub for elephant behavior, migration corridor, habitat preservation, rescue, treatment, rehabilitation of injured or orphaned elephants, advanced monitoring using AI, drones, GPS collars, satellite tracking, training centers for forest staff and veterinarians, public awareness campaign to promote coexistence. Simply अपन देखिए जो
रिलायंस कंपनी जो बंतारा जोटा आपनकर अच्छी एटा काफ़ी वायरल होता गोटे टाइम रे तापर क्वेश्चन भी आसाला लास्ट ईयर प्रिलिम्स रे तो सही टाइप रो एनिमल हैबिटेट को हमको फाइंड आउट करने को पड़ो. इफ यू सी द सिग्निफिकेंस, ओडिशा इज होम टू ओवर 1900 wild elephants. The state is a hotspot for elephant corridor but faces frequent human elephant conflict. A global first initiative showcasing India's leadership in the megafauna conservation. So this jumbo animals, they can travel a lot of miles of kilometers for the food and water. तेणु से प्रॉपर कंजर्वेशन फूड ये सब नेचुरल हैबिटेट आमको प्रोवाइड करने को पड़ो. सो से वर्ल्ड फर्स्ट सेंटर फॉर जंबो आपंकर ओडिशा रे ही देखा मिले. IUCN स्टेटस देखिए एंडेंजर्ड शेड्यूल 1 रे एब्सोल्यूट प्रोटेक्शन दिया जाइए एंड इंडिया होस्ट ओवर 60% ऑफ ग्लोबल एशियन एलिफेंट पॉपुलेशन. प्रोजेक्ट एलिफेंट के आसला देखो 1922 रे एलिफेंट प्रोटेक्शन हैबिटेट कंजर्वेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट मिटिगेशन. MCQs को देखिए. With reference to elephant conservation in India, consider the following statements. The Asian elephant listed endangered. Odisha has announced the world first center for jumbo survival. Project Elephant is centrally sponsored scheme in 1992. कौन अब आंसर कौन तो? आंसर कौन हो? एंडेंजर्ड अच्छी आम देखी एंड देन फर्स्ट सेंटर आपंकर ओडिशा रे ही ओपन हो. एंड प्रोजेक्ट एलिफेंट इज सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम लॉन्च्ड इन 1992. ठीक अच्छे आंसर. ओके तो लॉन्च के करा 1992 प्रोजेक्ट एलिफेंट लॉन्च के करा देख प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992. Okay. Next, animal birth control 2023 mandate sterilization and vaccination of stray dogs. Supreme Court has banned the release of stray dogs in all residential areas. It's not banned but से completely कहला कौन vaccination and sterilization पर ही से मानक छड़ा जीवो. So answer आपनकर होबो कौन ना 1 and 3. Prevention of Cruelty to Animal Act 1960 provides a legal framework for animal protection in India. Okay, so 1 and 3 would be the answer. With reference to Great Nicobar project, the Forest Advisory Committee has cleared all forest rights claimed for the project. The Sompens, a particularly vulnerable tribal group, live in Great Nicobar. Great Nicobar Island is a UNESCO Biosphere Reserve. Second, third ठीक अच्छी, first ठीक हम नहीं कारण has cleared all forest rights claims. Obviously, सब forest right claims को clear करी नांदी. So answer would be 2 and 3. B. Consider the following statement about the Niti Aayog's model policy for homestays. It proposes single window clearance system, focuses only on the urban tourism development, not only on the urban tourism, they are focusing on the rural tourism as well, encourages use of eco-friendly practices and digital integration. So answer is 1 and 3. ओके मेन्स क्वेश्चन यानी कि एसए आज सैटरडे तो एसए क्वेश्चन मुझे आनी. एसए क्वेश्चन हूँ मैन इज बॉर्न फ्री एंड एवरीवेयर ही इज इन चेन. यहाँ आपंकर रुसोंकर गोटे कोट ये कोट को लेकिन आंसर लिखा चेष्टा करेंगे. मंडे दिन मुझे आपंकर यार किसी हाईलाइट देदेवी किंतु लिखा चेष्टा करेंगे मैन इज बॉर्न फ्री एवरीवेयर ही इज इन चेन. ओके बाकी जो मैंने चाहूँ फाउंडेशन कोर्स जॉइन करने आज हूँ 23 अगस्ट. तेणु आज आम बैच स्टार्ट हो जो मैंने चाहूँगी प्रिलिम्स मेन्स इंटरव्यू 3टा गाइडेंस से बैच को जॉइन करेंगे. बैच दुई भाग में अच्छी गोटे हूँ गोल्ड एंड प्लाटिनम. आप देखिए प्लाटिनम 4 years वैलिडिटी एंड 2 years वैलिडिटी अच्छी गोल्ड रे. जो मैंने ग्रेजुएशन रे अच्छा से निजर प्लान करेंगे प्रिपरेशन को लेकिन कोड यूज करेंगे जेइन लाइव जहाँ थ्रू आप मैक्सिमम डिस्काउंट पाइबे. आज ही बैच स्टार्ट हो ओरिएंटेशन ऑलरेडी मॉर्निंग रे सरी. पीडीएफ आपको टेलीग्राम रे मिल. ओके
ମାନେ ସେମିତି ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ତ ଜଣା ପଡ଼ୁନି ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋର ओरिजिनल ग्रुप तो नहीं वे नुआ ग्रुप अच्छी देर आर वेरी लेस नंबर ऑफ पीपल एटा ओरिजिनल ग्रुपटा एटा बैन ही गला क्लास अच्छी बीरबल क्लास अच्छी सो जना पड़ो जल्दी जना पड़ो देखा केते जण क्लीयर कर धीरे धीरे समस्त